चुनौतियों की वजह से आज हम यहां हैं। और सिर्फ हम ही नहीं हैं, 140 करोड़ लोगों का यह भवन है, चाहे नया वाला हो या पुराना वाला हो। तो आज के दिन ये मेरी ओर से एक विदाई भाषण भी है, अपने दल की ओर से, इस इमारत को, जिस इमारत में हिंदुस्तान की तकदीर लिखी गई संविधान सभा के माध्यम से। और वो तकदीर लिखने वाले संकीर्ण दायरों में नहीं सोचते थे। मैं उस पर आऊंगा थोड़ा 2 मिनट के बाद। माननीय सभापति जी, बहुत चर्चा होती है, 47 में बंटवारा हुआ था इस देश का। बंटवारे के बावजूद उतनी घृणा, उतनी नफरत, पीड़ा के बावजूद नहीं थी। अभी हाल में एक रोमिला जी की किताब आई, वो कहती हैं बड़ी खूबसूरती से, हैव वी मूव्ड फ्रॉम इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म टू सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म? क्या हम एकीकृत राष्ट्रवाद से एक विभाजित, विखंडित राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि यह इमारत, इसकी बुनियाद मेलजोल पे है। इसकी बुनियाद में बंटवारे के बावजूद बंटवारा नहीं हुआ। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सरकार जरूर बनाइए, अगला चुनाव भी लड़ेंगे, खूब दिल से लड़ेंगे। इंडिया भी रहेगा, भारत भी रहेगा, कोई में से एक चॉइस नहीं है, क्योंकि हमको इंडिया भारत करके जम्बू द्वीप तक नहीं जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो जो मेलजोल की सीमेंट है, उसका खात्मा हो रहा है, उसको बचाइए। माननीय सभापति जी, मैं 2 व्यक्तियों के मध्य में अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं। संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल जी लेके आए, और संविधान सभा में जब ड्राफ्ट सबमिट हुआ तो BR अंबेडकर ने वो ड्राफ्ट सबमिट किया। तो मैं सिर्फ कहता हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सारी बातें थी, ये प्रस्तावना के बारे में, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में काफी कुछ बोल चुके हैं, सॉवरेनिटी गिरवी ना चली जाए, मौलिक अधिकारों के बारे में। हमें आपके पीछे एक तराजू है, वो तराजू हमें लगाना होगा कि मौलिक अधिकार में कहां पहुंचे, सॉवरेनिटी में कहां पहुंचे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के मसले पे कहां पहुंचे। हाई फ्लाइंग वर्ड्स डोंट कवर अप आवर फेलियर्स, लेट्स नॉट लुक फॉर दैट। और एक मसला आया, उन्होंने एक जिक्र किया ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। माननीय सभापति जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब बड़ी शिद्दत से लोग काम में लग गए अधिकारों पर बात करने के लिए, तो राजा को शुरू में परेशानी नहीं हुई, लेकिन राजा को लगा कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें खुराफात की बू आ रही है। उसने क्या किया, दरवाजे बंद करवा दिए। जिस हॉल में वो लोग बैठते थे, वो चले गए दूसरे दरवाजे रूम में, उसको भी बंद करवा दिया। तो वो चले गए टेनिस कोर्ट में, सारी कार्रवाई पूरी की, उसको कहा ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट का जिक्र जवाहरलाल जी ने इसलिए किया था कि हमारे अंदर वो जज्बा हो, इमारत बनाने बिगाड़ने से इबारतें नहीं बदलनी चाहिए। हमारा जज्बा वही होना चाहिए जो ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट में जवाहरलाल जी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ने कहा। अब आते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा। माननीय सभापति जी, आप जिस इलाके से आती हैं, मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां ये बातें बड़ी प्रबल है। आजादी का मूल्यांकन होगा तो इस आधार पर होगा कि राजनीतिक आजादी, सामाजिक आर्थिक आजादी में कितनी तब्दील हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि एक दिन एक ज्वालामुखी बन जाएगा, और मैं उस ज्वालामुखी को बनते देख रहा हूं। वो इसलिए बनते देख रहा हूं कि जब मैं देखता हूं कि बिहार के जातिगत सर्वेक्षण पे देश के सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो मैं देखता हूं ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। यह एस्पिरेशनल वर्ग है, पिछड़ों की बड़ी आबादी, उसके एस्पिरेशन को आप सोशल डेमोक्रेसी के नजरिए से देखिए। जो बाबा साहब कह गए थे, 31 में आखिरी हुई, उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश बना। क्या इस देश को, यहां की सरकारों को, राज्यों की सरकार को वैज्ञानिक आंकड़े नहीं चाहिए? क्या आप आंकड़े आसमान से गिराएंगे? मैं समझता हूं आज के दिन यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम इन आंकड़ों को लाएं, उसके आधार पर अपनी नीतियां तय करें। एक माननीय सभापति जी, अंबेडकर साहब 2 और चीज कह के गए, प्रिवेंटिंग टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। मैं बार बार इस सदन में कह चुका हूं कि मेजॉरिटी बेहद आवश्यक चीज है, मेजॉरिटी के बिना सरकार नहीं चलती है, लेकिन मेजॉरिटी और मेजॉरिटेरियनिज्म में फर्क है। यह फर्क अगर हमारी सरकार भूल जाती है तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जब
मित्र ने कहा, मैं अक्सर देखता हूं हम जैसे लोग छोटी आलोचना भी करते हैं, छोटी मोटी आलोचना जो कभी व्यक्तिगत नहीं होती है। आप कहते हो कि पाकिस्तान चले जाओ, अरे कभी देखा भी हो कितनी जगह है वहां, वहां का भूगोल क्या है, इतने लोग नहीं अट पाएंगे। मान लीजिए कि 65% लोगों ने आपको पिछली बार वोट नहीं किया, सबको पाकिस्तान भेज दोगे? ऐसी कोई व्यवस्था होती है? यहीं मेलजुल से रहना है, यहीं मिलकर रहना है। और ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अंबेडकर साहब कह के गए थे। मैडम, आपकी तरफ से मैं एक और चीज, एक दो छोटी चीज कह करके, इस देश की एक बड़ी आबादी, सभापति महोदया, मैं आपका सभापति महोदया अभी बिल मत, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, आज पहली बार हैं, इतने नजरिए इनाद कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी को लेकर के हमारा दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। सरकार में आप हो, हम हो, बेरोजगारी हम सबकी पॉलिटिक्स खत्म कर देगा। राइट टू एम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या सोच रहे हैं? और इस देश की एक बड़ी आबादी से देशभक्ति का जो प्रमाण पत्र हम मांगते हैं ना मैडम, वो कहीं चलेगा नहीं। मैं आखिरी चीज कह करके एक सुनाना चाहता था। मैं इसलिए कहता हूं, एक घर में 5 सदस्य हैं, उसमें हर 5वां सदस्य उस आबादी का है। अगर उस घर में उस 5वें सदस्य को आप एलिनेट करेंगे, दूर करेंगे, घर कभी महफूज नहीं रह सकता। और आखिरी में मैं साहिर को जाता हूं और वहीं खत्म कर दूंगा, आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने वो हंसी ख्वाब क्या हुए। दौलत बढ़ी तो मुल्क में अफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली आवाम के असबाब क्या हुए। जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, वो दोस्त, वो रफीक, वो अहबाब क्या हुए। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम, वो सजाए याब क्या हुए। बेकस बरहनगी को कफन तक नहीं नसीब, वो बादा आए अतलसों के मुखाब क्या हुए। जमहूरियत नवाज बशर दोस्त अमन ख्वाह, खुद को जो खुद दिए थे वो अलकाब क्या हुए। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, वो नुस्खा हाय नादिर व नायाब क्या हुए। हर कूचा शोला जा रहे, हर शहर कत्लगाह, यकजहतिया हयात के आदाब क्या हुए। सहराए तीरगी में भटकती है जिंदगी, उभरे थे जो उफक पे वो माताब क्या हुए। मुजरिम हूं अगर मैं तो गुनहगार तुम भी हो, मुजरिम हूं अगर मैं तो गुनहगार तुम भी हो, ए रहबराने कौम खताकार तुम भी हो। जय हिंद मैम, एंड सैल्यूट टू ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, संविधान सभा के उन तमाम लोगों को। और मैं चाहूंगा कि सेंगोल के बगल में एक बड़ी आकृति में इनकी तस्वीरें वहां लगाई जाएं और हमें प्रेरणा देते रहें। जय हिंद। धन्यवाद। श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। श्री वीरेंद्र प्रसाद। Yes, I'm here. Thank you, Madam Chairman, for allowing me to speak on the historic occasion. Today is the last day. If in our parliament life we are sitting, with all the members sitting for the last time in this building. Tomorrow, another journey will start. It is privilege for us. We are the person who got opportunity to speak, attend this old parliament, and we're going to get opportunity to speak in our new parliament. I remember, sir, when I was a student of class 8, for the first time in my life, I visited Delhi. Sir, I am from Assam. You know, northeastern region, more than 2,000 kilometers away from the duty. Definitely, as a school student, I visited here, and we are traveling all the important parts, spots of Delhi, and
in class 8 in my life, for the first time, physically, I seen our Parliament House. And it was from the outside, not from the inside. Sir, in 1996, I was elected Member of Parliament from Assam in Lok Sabha, sir, madam. In class 8, physically I have seen the Parliament House from the outside. And in 1996, physically for the first, I entered this house as a Member of Parliament. And fortunately, I was the took responsibility as a cabinet minister of the country in the year 1996. And it was my privilege to attend both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, although I was a member of Lok Sabha, but as a minister, I was attended this house also. It is painful, no doubt, from tomorrow we are not here. But we are jubilant also. We are privileged, we are lucky. From the next day, tomorrow, we are going to attend the new Parliament House with modern art and technology. The Parliament has a long history. I remember many things. This is the Parliament, this is the building where first Indian financial budget was passed by then Prime Minister Jawaharlal Nehru. Again, I am speaking, I remembering, when China attacked my country, my motherland in 60s, then Prime Minister Jawaharlal Nehru given goodbye people of northeastern region from India. This is the sentiment of us. This is the sentiment of. After then, many things was discussed inside this Parliament building. When China came to near to Tezpur, China came up to Bombila. People of Assam, people of northeastern region, especially Arunachal people, they are crying. We are not equipped to fight against China. And at that time, Assam was given farewell goodbye to then Prime Minister Jawaharlal Nehru. But sir, after 16th when session was assembled, at that time I salute great parliamentarian of India, great parliament from Assam, Hem Borua, who had fought for Assam and who have given one to the government from this house. Sir, this parliament also equally witness of imposing emergency in our country. Because for the first time emergency was declared, evoked in our country. And at that time, parliament was not functioning, parliament was dissolved. Our honorable Prime Minister always says, India is the mother of democracy. Yes, Prime Minister is very right, India is the mother of democracy. But one thing, Shantanu Sanjay, you should remember, but historians said, ancient Greece was the first country of the world who revoked democracy. But this is not correct. This is not correct. In Bihar, first Indian democracy started in Boishali. It was started in Boishali, not 500 years ago. It was started 600 years ago. And Boishali of our country is the first place of democracy started, where in Boishali town, it had 600 years ago, 707,000 people
locally elected people, selected people sit together to make a decision, and this is the first democratical decision of our country. Madam, we are going to new house today. This house will be the witness of modern technology, modern art. We hope, we believe in coming house where we are going to tomorrow will bring more important law for our country, for develop our country, and financially to improve our country. Many more discussion will take place. I remember, I have seen very, very important person, dignitaries functioning in this house. Just 2 minutes, then I come. 1 minute tha. Okay, just 2 minutes. I remember K.K. Narayan as a vice president of our country who shared the house. I remember Pharaoh Singh Shekhawat. I remember Hamid Ansari. I remember Venkaiah Naidu ji for their contribution to our parliamentary democracy. Especially, I must speak one thing from my heart. I salute Venkaiah Naidu ji because from this year, always Venkaiah Naidu encouraging all the members of the House to speak their mother tongue. He was a very knowledgeable person. Always he encouraging about the mother tongue. Definitely Venkaiah Naidu has a great, great contribution to this House. Equally, our present chairman also always given us guidance, speaking about our history, especially in the legal side, he always given us the guidance. Ma'am, I remember, if I'm not speaking, this is not fair. I have got opportunity to witness the speech of Bajpayee, budget presentation of Pranab Mukherjee ji. Wonderful oratory personality of Madam Sushma ji. Learned speaker Arun Jaitley ji. I am learned many things from these people, sir. Ma'am, I remembering my first day in the life when I was a student of class 8. I have seen this parliament building from the outside. And in the 1996, I entered this house as a member of parliament. And this is the beauty of our democracy. My family don't have any political background. I am not a son of any minister. I am not a son of any MP. I was not a son of any politician. But I am a son of the soil. I am a son of the soil. And this is the beauty of democracy. I am elected from son of the soil of this wonderful parliament. Definitely, if I am not speaking about my political party, then it will be not fair. I am getting this opportunity. My political party, Assam Gana Parishad, is a regional political party with a national outlook. And I am grateful for my country. In my life, I am working only one party. This is my party. This is Assam Gana Parishad. Still, I am a member of Assam Gana Parishad. And I am really grateful to my party for send me to Lok Sabha, for send me to Rajya Sabha as a member of parliament. With this, I believe we all members gathering here in our last day of this building, we always remembering our memory in this building, and from tomorrow in new building
we start our new parliamentary life, our new democratic life with this word. I conclude. Thank you very much. Thank you. Sri Jose K. Boni. So today we gather here to reflect upon an extraordinary journey, more than 70 years of Indian Parliament. For 3/4 of a century, it has served as a cornerstone of our nation's governance. It is a journey marked by trials, triumphs, and unyielding commitment to the ideal of democratic republic. The framers of our Constitution envisioned a vibrant democracy where every citizen, irrespective of caste, creed, or gender, had a voice and a vote. Our Parliament was entrusted with the sacred duty of upholding these principles. In last 7 decades, many Latin American and Afro-Asian countries sailed along with us, sank and disappeared. Even the mighty USSR and the entire Eastern European nations collapsed like a palace of cards. But we keep on sailing because on the most of our ship, the flag of parliamentary democracy flutters. We have seen heated debates, fiery discussions, and passionate argument, the very essence of parliamentary democracy. Over the years, it has played a pivotal role in shaping India's destiny. It has been source of progressive legislation, from the eradication of untouchability to the establishment of gender equality, from comprehensive land reforms to the liberalization of our economy. As we celebrate the remarkable journey, let us also acknowledge the challenges we face. Our Parliament, like any other institutions, has had its share of ups and downs. It is an undeniable fact that recent years have witnessed instances of undemocratic parliamentary methods and procedures which threaten the very essence of democracy. There have been occasions where legislative debates have been curtailed, opposition's voice silenced, and crucial bills passed without due discussions and scrutiny. The integrity of the Parliament committee and internal part of our democratic system has at times been compromised. Delays in appointments and the politicization of these committees have hindered their effectiveness. Only 25% of the bills were referred to these committees. Such a low referral rate of bills to the committee during the 16th Lok Sabha clearly shows the government is not open to the scrutiny and engagement that the committee offers. The suppression of the dissent, be it from the civil society, academia, or the media, is a matter of deep concern. A thriving democracy encourages diverse perspective and respect the right of dissent. Recent incident involving curtailment of free speech cast doubt on the government's commitment to these democratic values. The robust democracy thrives on open communication and the free exchange of ideas. Curtailing these fundamental rights poses the threat to the health of our democracy. With the inauguration of the new Parliament building, let us anticipate a transformative shift in our engagement with this paramount institution. May this symbol of progress empower us all to become the collective voice of the people of our nation, steering our democracy towards a brighter and more inclusive future. May our Parliament continue to be the beacon of hope and the voice of the people for generations to come. Thank you. Mr. Praful Patel. Thank you, Chairman, sir. I get up to
to speak probably for the last. I get up to speak probably for the last time in this very august building, and How can you be so sure? well, I said probably, and I'm sure we are all filled with a No, sense tomorrow of. we are meeting Dr. Keshav, therefore I'm saying. And of course, we are Me all. and Praful Patel go together in Parliament as members of 9th Lok Sabha. So we have all assembled here, sir, and obviously this is a feeling and a sense of nostalgia. As you have very rightly pointed out, not only our long association, but my very own long association with Parliament, with many times in the Lok Sabha as well as in the Rajya Sabha, and having completed more than 32 years as a member of Parliament. So, sir, I definitely feel that I share the sentiments of most of my colleagues who have been speaking here. And definitely, 75 years of independence, our country has really come a long way. And our democracy, no matter what the assaults have been from within and outside, has withstood the test of time and has got stronger by the passing day. And this democracy, which we pride ourselves in, and which the world also now looks up upon us as something to be cherished. Dr. Ambedkar gave us a wonderful constitution. Along with him, many other stalwarts joined him and presented the constitution to the Constituent Assembly. And certainly, our constitution can be rated as one of the finest constitutions drafted anywhere for any country in the world. And I think that is something we should be very proud of. And a country which is so diverse as India, as vast as India, as populous as India, certainly requires a binding force, a glue, and that our Constitution has very ably provided us and stood the test of time. A country, I think when we go abroad and we see many countries and we look at their democracies, of course, there are very many shining examples, but no country, as again I repeat, as populous as India, 140 crore people, speaking so many languages, so many dialects, so many religions, so many states, so many ethnicities, can be remaining together as one is sometimes, I think, really an astonishment for many people in the world. We recently had the G20 summit in India, and I'm sure whatever though we could not participate ourselves, but as government of India, as projected and as seen by us and all the world, I'm sure that every single leader who came to India would have been proud of what India has achieved in its last 75 years. It is not a mean feat, sir. We have ourselves, when we came to Parliament, I remember, we were, you and me and all of us, many who were there in the past, Ram Gopal ji ko bhi yaad hoga, कि हम पहले 25 टेलीफोन के कनेक्शन किसको दें या गैस के सिलेंडर हम किसको हम अपने एमपी कोटा से दें, यहाँ से हमारी शुरुआत होती थी केशव राव जी. एंड वो दिन भी हमने देखे हैं कि टेलीफोन का कनेक्शन अगर नॉर्मल कोर्स में हम लगाएं तो 15-15, 20-20 साल के बाद हमको नंबर लगता था. तो उस और गैस के कनेक्शन की भी वही परिस्थिति थी और ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेज माना जाता था. तो उस जमाने से लेकर आज, हरदीप जी आप पेट्रोलियम मंत्री हैं, आपको मालूम है कि आज कितने बड़े पैमाने पर हमारे देश में न केवल गैस की बात करें या टेलीफोन की बात करें, लेकिन पूरी तरह से हमारे देश की जो आम तौर पर जो प्रगति हुई है, ये एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा मिसाल बनी हुई है. और इसीलिए 75 वर्ष जब हम पूरे करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं और इस सदन से नए सदन में जाने की बात करते हैं,
तो आज का भारत और भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए, आधुनिक भारत कैसा होना चाहिए, इसके लिए निश्चित इस सदन में एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए और मंथन होना चाहिए और हर व्यक्ति का यहाँ पर जो सुझाव है उसका एक अहम महत्व होता है। हर संसद सदस्य जो यहाँ पर बैठा है ये सदन में या उस सदन में, उनके अनुभव का पूरा इस्तेमाल करके देश हित में और जनहित में हम लोगों ने उसका इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाने का काम करना चाहिए। आज देश में क्या क्या बातें नहीं होती है, आज हम देखते हैं कि कितना विषमताएं होने के बाद, कितनी मतलब गरीबी भी है, अमीरी भी है, सब कुछ होते हुए भी लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा अभिन्न अंग है और तभी हम ये सारी बातों को, कोई भी समस्याएं आती है, बाधाएं आती, उसको पार कर पाते हैं क्योंकि हमारे देश में सहनशीलता और सबको एक दूसरे के साथ लेकर चलने की हमारे मन में भावना है। और यह हमारे संविधान ने भी हमको दिया है, जो एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार। बहुत लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, हम अमेरिका के डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेसी में भी जो काली चमड़ी के लोग थे, जो अफ्रीकन डिसेंट के लोग थे, उनको भी वोट का अधिकार 1960 के दशक में जब मार्टिन लूथर किंग ने लड़ाई लड़ी उसके बाद मिला। तब तक उनको बराबरी का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस देश में सभी को बराबरी का अधिकार हमारे संविधान में 1950 में हमको दिया, जो हमारे आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जो और विश्व के कोई बड़े देशों में नहीं रही है। लेकिन निश्चित नए भवन में एक आधुनिक भारत की और भविष्य के भारत की, उसकी भी झलक हमको नजर आएगी। एक और हम चंद्रयान पहुंचे, एक और हम हमारे देश में इतना तक हमको नजर आएगी। एक और हम चंद्रयान पहुंचे, एक और हम हमारे देश में इतना तंत्र और विज्ञान का आज उपयोग कर रहे हैं। आज हमारा देश टेक्नोलॉजी में विश्व में एक अग्रणी स्थान प्राप्त कर चुका है। अमेरिका की और विश्व की बड़ी बड़ी जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन सारे कंपनीज के जो प्रमुख लोग हैं, वहाँ के प्रमुख इनोवेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो हमारे भारतीय हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और ऐसे एक आधुनिक युग में जब हम जा रहे हैं और भविष्य के भारत का और नए भारत का सपना जब हम देख रहे हैं, नौजवान भारत का सपना देख रहे हैं, तो निश्चित नए सदन का भी एक अहम उसका एक महत्व रहेगा। और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हमारे सदन का सुचारू रूप से नए सदन में भी कामकाज जारी रहेगा और नए सदन के माध्यम से हमारी जो देश की जो युवाओं की और भविष्य की पीढ़ी की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसकी जरूर पूर्ति होगी। इसी विश्वास के साथ हमारे देश के 75 वर्ष पूरे हुए, हमारे देश के लोगों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूं। No, the honorable member has put across his points with positivity, and that is what is required. At an occasion like this, we all have to converge to see Bharat blossoms, politics apart. So that's a very important contribution. Sri Bhuvaneshwar Kalita. Thank you, Honorable Chairman, for giving me the क्या पता opportunity. कौन कितनी गलत जगह बैठा हुआ है? Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on this historic occasion of Rajya Sabha, to speak on the parliamentary journey of 75 years, starting from Samvidhan Sabha. Sir, today I remember when I came first to Rajya Sabha in 1984, when Justice Hidayatullah was presiding over that chair, and he was followed by, of course, R. Venkat Ramanji, Sangadel Sarmaji,
And today, you are in the seat, sir, and I thank you for that, that the Indian democracy and Indian parliament has come over years of development and strengthening the democracy in this country. So today, I congratulate the new Vice Chairman for taking up the chair. Thank you. Today, as we assemble here to reflect upon the parliamentary journey of 75 years, starting from inception of the Samvidhan Sabha, we embark on a profound exploration of our nation's democratic evolution. This remarkable journey has been marked by achievements, experiences, memories, and invaluable lessons that have not only shaped our parliamentary institutions, but have also left an indelible imprint on the course of our nation's history. Madam Chair, while speaking on these 75 years of our journey, we must remember about some of the key milestones in the history of Indian Parliament. Madam, 1946, the Constituent Assembly convened for the first time on December 9th. So our journey starts from there. And in 1950, India adopted its constitution on January 26th, a momentous event for Indian parliamentary democracy. Madam, in 1952, the first general elections were held, marking the initiation of our democracy. And in 1956, the State Reorganizations Act has adopted, leading to reshaping of state boundaries. There was a struggle, and the then members of the Constituent Assembly had given shape to this country, and particularly by reorganizing the states for the convenience of the people and the administration. In 1957, with the second general election, the things have started moving, and in 1961, Goa, Daman, and Diu were new states where the new states got liberation. They were liberated and they were recognized as state. Madam, one historic occasion we must remember in this regard is that for the first time, the preamble of the Constitution was amended. We all remember the 42nd Amendment. And in 75, 77, of course, that was the period that the Indian democracy will remember, and the parliamentarians particularly, and the people of this country will remember because of its effects on the people. Madam, in 1986, a historic bill was passed, the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act was enacted. This is one historic legislation where the women of all religion, all communities were given equal power, and that equal power and equal opportunity and equal right. So this one we must remember during the discussion of this in this debate. And the economic liberalization came in 1991 during the Prime Ministership of P.V. Narasimha Raoji. And today we are step by step we are ahead to liberalize the economy and the benefits of the economy reaching to the poor and vulnerable sections because of that. And today, the country is progressing. The country has got remarkable progress in the economic field, where today India is considered as the 5th largest economy in the world. And very soon, our Honorable Prime Minister has publicly announced that within next few years, India will be one of the 3 top economies of the world. Madam, another
remarkable event during the progress of this democracy, during the progress of parliament, was the GST. The GST was, goods and services tax, was implemented and streamlining the taxation system. One nation, one tax was the motto, and today we have seen that the national exchequer is enriched by GST, and remarkable tax collection has been made, and which is helping the development of this country. So I remember, and the country will remember, this GST taxation for the benefit and for the progress of this country. Madam, one nation, one tax. But till 2019, till 2019, this country had two constitutions, two flags, and this was possible to make one nation, one flag, and one constitution by the amendment brought by and the abrogation act of Article 370, which was brought in 2019, which says we can be proud of being one nation, one flag, and one constitution. And I congratulate the government for that. Madam, I did not disturb you, although you said certain objectionable things, including balkanization of the country. So please don't do that. And Madam, the great thing, the great war that India fought was the COVID-19 pandemic. The India not only come out of this pandemic successfully, but also help other nations, neighboring countries, to fight with this. And the biggest achievement was the vaccines that India manufactured, and vaccines, and the entire country was vaccinated, and today we are safe in terms of healthcare. Madam, while talking about the achievements, what during the 75 years of our journey, what achievements this country has made. Madam, the main achievement which we can today discuss is the inclusivity. This efforts towards inclusivity, one of our speakers was giving an example with a senior leader that it is not only India, other parts of the world also had the inclusivity in terms of women representation. The women representation has increased from 5% in 1951 to 14% in 2019. And the number of voters increased dramatically from 173.2 million in 1951 to 912 million in 2019. So this is not a less achievement. This has strengthened the democracy of this country. These things have improved, and this has brought achievement to our democracy, to our parliamentary democracy. Madam, some of the experience and some of the achievements that we have made is the 2023 where we are today. Today, we are sitting here in the Rajya Sabha chamber, and some of our members have become emotional also that maybe from tomorrow we will be going to the new building. This new building is that we have to cross a line. Up to this
75 years, we have achieved a lot. But from here, we have to go, we have to make a leap forward so that this country becomes the developed economy. So next 25 years, in the new building of Parliament, we are having our Amrit Kal, where India will reach in the line of developed nation. So that will be our effort. And every one of us should make our efforts in our own way. Every Indian, every single citizen should make their own effort to make this country a developed nation by 2047, when we will be completing our 100 years of Indian Parliament and Indian democracy. So, now I'm going to conclude because there are some more speakers. They are also, and this special station is today convened to commemorate the 75-year of journey of our Parliament. What is our experience during this period? Sir, Madam, to conclude my speech here, I want to say that our journey through parliamentary evolution of India over past 75 years has been one of both reflection and insight. While we have witnessed certain challenges and shifts in the parliamentary dynamics, it is essential to recognize the significant efforts made to foster inclusivity within our democratic institutions. The rise of women's representation, the active engagement of citizens in public debates, the crucial role of parliamentary committees, and the passage of legislation aimed at social welfare and labor rights are testaments of our commitment to inclusivity. Madam, as we commemorate the key milestones in the history of the Indian Parliament, we are reminded of the enduring spirit of our democracy. From the adoption of Constitution in 1950 to the recent inauguration of a new Parliament building in 2023, these events signify our nation's growth, resilience, and adaptability in the face of challenges. As we move forward, Madam, it is imperative that we continue to uphold the principles of democracy, inclusivity, and transparency that have been the cornerstones of our parliamentary democracy. By learning from our past and embracing the opportunities of the future, we can ensure that our democratic institutions remain robust and responsive to the ever-changing needs and aspirations of our diverse and dynamic nation. Let us celebrate this journey, Madam. Let us celebrate this journey with pride and commitment to a more inclusive and vibrant future for Indian democracy. Thank you, Vice Chair, for giving me the opportunity. Thank you very much. माननीय सदस्य विक्रमजीत सिंह साइनी। Honorable Chairman, sir, and my fellow parliamentarians, today when I stand here to speak on this historic occasion of the transition from historic Parliament House to the iconic new Parliament building representing the new India as India approaches a major milestone in the 75th year of the Parliament. Ma'am, Parliament House is not just a building of brick and mortar, whereas it is a living institution which has to be safeguarded and embrace the idea of India. It's the fundamental temper of our world's largest democracy. Indian Parliament is an inspiring story of our civilization's strive for respect and resources with our values intact as the largest democracy in the world. We embody the unique fiber of our being, unity in diversity, secularism, pluralism,
social justice and equal fundamental rights for each citizen. On this historic occasion, Chairman, I would like to remember and pay a homage to our ancestors, and as my father used to narrate, the horrors of partition still haunt us. I think Punjab and Punjabis suffered the most out of it. There were about 2 million people who lost their lives, and about 14 million people had to abandon their homes in the giant exodus. लाखों लोग बेघर हो गए और उन्होंने भारत को, इंडिया को, भारत अपनी मातृभूमि को अपनी जन्मभूमि माना और अपना सब कुछ, अपना कारोबार, अपने बर्तन, अपना जायदादें, अपना सब कुछ छोड़ के लाखों पंजाबी सफर करते हुए भारत को चुना, भारत को माना और फिर एज ए रेफ्यूजी दे स्टार्टेड देयर कैरियर और फिर रेफ्यूजी से बिल्डअप किया। ये उनकी देशभक्ति की सबसे बड़ी निशानी है और उन्होंने इस देशभक्ति का अभी तक पैट्रियटिज्म हमारे सामने है। I also pay homage to all the great Sikh leaders who spurned the offer of then Muhammad Ali Jinnah and decided to upkeep India as their motherland, and Punjabis and Sikhs have been proving their patriotism till today. We Sikhs are not by chance Indians, we are proudly by choice Indians. Honorable Chairman, sir, we also pay tribute to them. Dehe Shiva, Var Mohe Ehe, Shubh Karmante, Kabhu na Taru, Jab Aав ki Aud Nidhan Bane, At hi Ran Mein, Tab Jooj Maru. I would also like to remember on this historic occasion the Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, who drew the attention of the British Samrajya and this very own parliament to further strengthen the freedom struggle. In this same parliament building, while presenting the constitution to our country, Dr. Bhim Rao Ambedkar had said, however good a constitution may be, if those who are implementing are not good, it will prove to be a bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. So onus is on us parliamentarians on 75th year of the parliament. The dream, voice and aspirations of a nation suppressed by a colonial rule came to surface. As they say, with great power comes great responsibility. We all sit here as the public representatives. We are emblematic of the aspirations of 1.4 billion people who want us to serve them. We represent them. We are their voice. We are their eyes. We are their ears. Eradicating poverty, unemployment, corruption, agrarian crisis, casteism, communal hatred have no place for India, and this parliament have to work for the fundamental things like ensuring health, education, infrastructure, nation's inclusive development, women empowerment, youth empowerment. ये अमृत काल तभी ही अमृत होगा अगर हम विद्या का, शिक्षा का अमृत, सेहत का अमृत, हेल्थ का अमृत, रोजगार का अमृत हर एक गांव में हर एक भारतीय को पहुंचाएंगे. So we as representatives of our nationals, we have to conduct ourselves, define the character of the august houses, and therefore our conduct withholds our respect to the underlying values and nobleness of this esteemed institution forged for our safeguarding by our four leaders. Honorable Chairman, the disruptions which happens in the Parliament act as a hurdle in this fundamental process for a smooth functioning of Parliament. I personally think, with my experience of 1 year, both Treasury and opposition have to together play a positive and constructive role so that optimum productivity of this institution is maintained. I take this historic opportunity to pay homage to stalwarts like my elder brother, Shri Arun Jaitley ji, my elder dearest sister who given me love as a brother for 25 years, Shrimati Sushma Swaraj ji, and we pray for the long life of stalwart Dr. Manmohan Singh ji, who is here with us despite his ill health. It was Dr. Manmohan Singh ji who brought radical changes to the economy in '91, and he had said
कुछ ऐसे भी मंजिर तारीख की नज़रों में, कुछ ऐसे भी मंजिर हैं तारीख की नज़रों में, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. It is our humble invocation to every individual sitting here, both from government, treasury benches and opposition, that we all should commit to this parliament, that in the new parliament house, we will ensure healthy debates, discussions, least disruptions and adjournments, and we do maximum work for the nation building. Jai Hind. थैंक यू. माननीय सदस्य श्रीमती ममता मोहंता. धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ होना. मेरी पार्टी बीजू जनता दल के तरफ से इस पवित्र गृह में मुझे बोलने का मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ. मेरा देश भारत धर्म, भाषा, वर्ण और जाति के दायरे में से आगे हम सभी एक हैं. हम केवल भारतीय हैं. आप सभी भारत वर्ष का इतिहास जानते हैं. भारत देश कैसे और कब स्वाधीन हुआ, कितने बलिदान, त्याग, समर्पण के बाद स्वाधीन भारत हमें हासिल हुआ. इन सभी संग्रामी व्यक्तित्व को मैं इस पवित्र गृह से नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि ज्ञापन करती हूँ. स्वाधीन भारत के सभी लोग को शासन पद्धति में रख के सुविधा देने की स्वाधीन भारत के सभी लोग को शासन पद्धति में रखकर सुविधा देने की समय में देश को संविधान की आवश्यकता पड़ी, जो सभी भारतीयों को समानता प्रदान करे. स्वाधीन प्रणेता बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर को भी इस गृह से नमन करती हूँ, जिसके कलम की ताकत से इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं भी समानता प्राप्त कर रहे हैं. 1950 जनवरी 26 को इस संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र भारत का शुरुआत हुआ. तभी से जाति, वर्ण, धर्म, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में सभी को समान सुविधा मिला. इस संविधान के चलते हुए देश में शासन पद्धति लागू हुआ. इस प्रजातंत्र अर्थात गणतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समान गुरुत्व दिया गया. आज हम 21 सेंचुरी में पहुंच गए. विश्व के अन्य देश के हिसाब से यहाँ का लोकतंत्र और सुदृढ़ हुआ है. एक आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति भारत देश का सबसे बड़ी पदवी महामहिम राष्ट्रपति की पदवी में अवस्थापित है. मैं एक आदिवासी जिला से आके यहाँ आप सबके सामने कुछ कह पा रही हूँ. इसी से बड़ी बात क्या है, महिला के विकास का और क्या उदाहरण दो. आज अगर आप कहीं भी जाओ तो ज़्यादातर इलाका में महिला जिला कलेक्टर, जिला एसपी, महिला सरकारी कर्मचारी ज़्यादा पाएंगे. शिक्षा क्षेत्र में आप देखें IIT, IIM, MBBS, UPSC सभी क्षेत्रों में महिला को दबदबा है. भारतवर्ष में 700 से ज़्यादा आदिवासी वर्ग है. भारत के 8.6% इनका संख्या है. आज के हिसाब से संख्या बढ़ गई है. देश गठन के समय से ही इस वर्ग को गुरुत्व दिया गया है. सभी राज्य आदिवासी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक विकास तथा उनका संस्कृति की सुरक्षा, भाषा की सुरक्षा दिया जा रहा है. उनके विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है. सबसे बड़ी बात है कि उनकी भाषा में उन्हें शिक्षा दिया जा रहा है. लेकिन आदिवासी संप्रदाय के आंचलिक भाषा को सुरक्षा देते हुए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना जरूरी है और संविधान के 8वें परिच्छेद में शामिल करना आवश्यकता है. शिक्षा क्षेत्र में भारत के पावन भूमि से चांद तक का यात्रा ही सबसे बड़ी उदाहरण है. यहाँ कितने विश्वविद्यालय, वैश्विक विश्वविद्यालय, भेषज विश्वविद्यालय समेत कितने अनुष्ठान हैं. यहाँ से लाखों संख्या में विद्यार्थी निकलते हैं जो देश विदेश में भारत का नाम रोशन करते हैं. इस देश में 77% से ज़्यादा शिक्षित है. 84% से ज़्यादा महिला और 71% से ज़्यादा पुरुष शिक्षित है.